So good morning, everyone. Good morning, everyone around the world. And good morning, all the audience out here who are listening to me and want to know more about what I'm going to say today. So today's topic is very interesting. Neural regeneration through neuroplasticity for chronic illness with high vibrational guided meditation. मतलब आपके जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो कैसे डेवलप होते हैं और कैसे हम उसको डेवलप कर सकते हैं अगर आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कशन किया जा सकता है, पर मैं इसको बहुत छोटा करके बताने की कोशिश करती हूँ। So neuroplasticity training may be a missing piece in chronic pain, chronic illness, anxiety, trauma, and even food reactivity that has not improved with diet and gut healing. It can also help to improve cognitive function. So how does it work? तो कई बार हमारी जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पेन हो रहा है या कोई इलनेस है, क्रोनिक इलनेस है, एंजाइटी है, चिंता करते रहते हैं, वरी करते रहते हैं, कोई ट्रॉमा है, कोई दुख की बात हो गई है, या किसी भी फूड से आपको एलर्जी हो रही है जो कि आपके डाइट से कंट्रोल नहीं हो रही है या डाइजेशन से कंट्रोल नहीं हो रही है, तो हाँ, और सीबीटी से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और न्यूरल डेवलपमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। So brain has the amazing ability to rewire itself so that we can learn new skill, function better, decrease chronic pain, even regain functioning after a stroke or traumatic brain injury. So this ability is referred to as neuroplasticity. Here we will see how to harness the power of neuroplasticity to improve our cognitive abilities, mental and physical. So what is, हम इसको क्या कर सकते हैं, कैसे हम ब्रेन को हम यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम पेन को ओवरपावर कर सकें या क्रॉनिक इलनेस में थोड़ी सी रिलीफ ला सके, वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ब्रेन की अमेजिंग एबिलिटी है कि वो रीवायर कर सकता है। आपके ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स हैं उसको फिर से डेवलप कर सकता है, उसको रीवायर कर सकता है ताकि हम नई चीजें सीख सके, तब हम नए तरीके से अपने पेन से या अपने इलनेस से फाइट कर सकते हैं। तो ये क्या है? Neuroplasticity is the brain's ability to rewire itself. The brain makes structural, functional, and connective changes based on internal and external stimulus, thus changing the way we mentally and physically function. तो कई बार हम जिस तरह से हम अपने जो ये ब्रेन है वो उसको हम ऐसी चीजें देते हैं, ऐसा काम देते हैं जिससे कि उसकी ब्रेन में जितनी भी नसें हैं वो सब चेंज हो जाती हैं और हमारा मेंटल और फिजिकल फंक्शन जो है वो अच्छा हो जाए। न्यूरोप्लास्टिक चेंज कैन बी हेल्पफुल, न्यूट्रल और हार्मफुल, तीनों चीजें हो सकती हैं। व्हेन इट इज हेल्पफुल, it might make us better at something like choosing sport, and when harmful, it might result in a trauma response or phantom limb pain after an injury. कई बार amputation कर दिया जाता है, पैर काट दिया जाता है, तो उसमें फॉल्स पेन जो है वो दिखाई पड़ता है, वो आपको महसूस होता है। तो neuroplasticity is training is when we do things to help brain rewire itself. It is a form of training because it must be done repeatedly over time because the brain learns and rewires through repetition. तो बार बार हम एक चीज को करते हैं तभी brain rewire होता है। There are two primary ways that the brain changes. Neurons are cells in the brain that take information from our environment as well as send motor signals to the rest of the body. तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ब्रेन में इंफॉर्मेशन लेते हैं बाहर से भी और अंदर से भी, आपके शरीर के अंदर से, और फिर उसके बाद वो सिग्नल्स देते हैं बॉडी को कि क्या काम करना है। There are three types of plasticity.
तीन तरह से हमारे न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं. Neuronal regeneration, when neurons are regrown or repaired. Collateral sprouting, when the axons of the healthy neuron or brain cells grow into nearby damaged nervous tissue. मतलब जल्दी कुछ जो है नर्व्स डेवलप होते हैं अगर आपके वहां पे ब्रेन में डैमेज हो गया होता है. Then neurogenesis, when the brain makes new neurons in adulthood. तो न्यूरोजेनेसिस में क्या होता है कि आप जब बड़े हो जाते हैं तब वो डेवलप होता है. When we are babies, we have plenty of neural connections. Synapses, इसको हम synapses बोलते हैं. As we interact with our environment, our brain keep the synaptic connections. We use a lot of pruning also. तो जब बड़े होने लगते हैं तो यही synapses को हम कटिंग करते हैं, pruning करते हैं. जैसे हम पेड़ों की करते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में pruning होती रहती है. जिन जिन न्यूरॉन्स की जरूरत नहीं होती है उनको हम हटाते जाते हैं. That is why it may be harder for adults to learn a musical instrument. As a child, you can learn it, and thanks to neurogenesis, the brain's ability to make new neurons in adulthood, we still can play music as an adult. थोड़ा difficult होता है बड़े होने पर हम सीख सकते हैं. Then functional reorganization. This occurs when a functional part of the brain takes over the function lost by another part of the brain, often due to damage to the part of brain. Human brain has a few different ways that neurons can rewire and help us function better in our everyday life. तो functional में क्या होता है, अगर आपका कोई डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करता है ब्रेन और उसमें जो है यही न्यूरोप्लास्टिसिटी काम आती है और आप जो है अच्छे से वर्क कर सकते. So what is neuroplasticity training? There are different types of neuroplasticity training that may be used to achieve different goals. Occupational therapy, brain training games, जिसमें आप कॉग्निशन भी सीखते हैं. आप सीखते हैं कि कैसे आप नया कोई इंस्ट्रूमेंट लर्न कर रहे हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं. मेडिटेशन, जिससे कि ब्रेन में जो पेन सिग्नल्स जाते हैं वो कम हो जाते हैं. Decreases the pain signals. Many neuroplasticity training programs aimed at healing involve specifically targeted mind-body modalities, including meditation or mindfulness training, breath work, visualization, जो कि मैं आपको करवाती हूँ, cognitive behavioral therapy and emotional restructuring. बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं. Now the region of the brain, कहाँ पे डेवलप होता है, कौन सा पार्ट जो है वो हम डेवलप करते हैं. तो इससे पहले कि हम इस पे जाए न्यूरोप्लास्टिसिटी पे, पहले भी मैंने बताया पर इसमें मैं और डिटेल में बताती हूँ कि किस तरह से कौन से पार्ट जो है वो ब्रेन को डेवलप करते हैं. तो जिससे कि आप उस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम, न्यूरोलॉजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं. So when choosing what kind of neurological training program you want to try, you want to know what brain region or function you are targeting. So targeting the function of the brain, it needs specific healing system or specific target area so that you can use neuroplasticity for your own goals. Neuroplasticity generally targets the limbic system, that is brain system, a set of brain structures including amygdala and hippocampus, which two together are responsible for emotions, behavior, and memories. Here we can, there are different regions, that is prefrontal cortex, then there is hippocampus and amygdala, then there is cerebral cortex, frontal, temporal, parietal, and occipital lobes. All four lobes of the brain are part of prefrontal cortex, and they have a role in behavior and mood. So how can neuroplasticity training help? There are many ways that neuroplasticity training can help us with everyday life functioning or with more serious issues such as brain stroke, chronic pain,
cognitive decline, anxiety, and depression. Let's look at the neuroscience supporting the benefits of neuroplasticity training. It increases the learning ability. Synaptic plasticity is important in process of learning and memory. तो जो हम नए नए न्यूरॉन्स डेवलप करते हैं उससे क्या होता है, आपकी लर्निंग भी बढ़ती है, मेमोरी भी बढ़ती है, स्किल्स, आप नए स्किल्स भी सीखते हैं, आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है जैसे हाथ पैर मूवमेंट का फंक्शन है वो भी डेवलप होता है। हम लोग जब ओल्ड होने लगते हैं तो हमारा स्लो डाउन होने लगता है, हम धीरे धीरे काम करते हैं, उसको जल्दी जल्दी काम करने के लिए हम ये न्यूरोप्लास्टिसिटी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अल्जाइमर में ऐसा होता है कि आपका हाथ पैर जो है वो कम काम करता है, तो इसके लिए न्यूरल पाथवेज हम एक्टिवेट करते हैं और फिर हमारा जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो बढ़ जाता है। पार्किंसन में भी इसको यूज किया जाता है। अल्जाइमर में आपको याद नहीं रहता है, पार्किंसन में आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं और आपके हाथ पैर इवन पूरा बॉडी जो है वो यूज नहीं कर पाते हैं, तो हम इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज कर सकते हैं। कई बार साइकोटिक डिसऑर्डर, जो मन की जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी ट्रीट किया जा सकता है। वी कैन ट्रीट psychotic disorders also. And after traumatic brain surgery or stroke, we can always use these methods to improve the cognition of the body. Now, what is chronic illness? Chronic illness जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो बहुत ही सीरियस बीमारी होती है। A chronic illness is a long-term health condition that may not have a cure. A disease or condition that usually lasts for 3 months or longer may get worse over time. ऐसी illness जो जिसका कोई इलाज नहीं है और जो 3 महीने से ज्यादा समय तक रहे और धीरे धीरे वो और बढ़ता ही जाता है, वो डिजीज बढ़ती जाती है। Chronic diseases tend to occur in older adults and can usually be controlled but not cured. वो मैनेज किया जाता है, क्योर नहीं हो सकता। The most common type of chronic illness are cancer, heart disease, stroke, diabetes, arthritis, then asthma, back pain, cardiovascular disease, that is heart problem, chronic obstructive pulmonary disease, that is asthma, diabetes, chronic kidney disease, mental health conditions, osteoporosis, Alzheimer, dementia, Crohn's disease, cystic fibrosis, epilepsy, and so on, high BP, mood disorders, multiple sclerosis, and Parkinson. Chronic disease such as heart disease and cancer and diabetes are the leading cause of death and disabilities. Living with chronic illness can make you feel very alone. Learn about staying connected with people to help you cope with your illness. तो इस तरह से बहुत सारी डिजीजेस हैं जिनके बारे में मैंने बताया, और इसके साथ रहना, आपको अगर कोई एक डिजीज हो गई, आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं, तो आपको लोगों से कनेक्टेड रहना है। आप कनेक्टेड रहेंगे तो आप अपनी बीमारी से लड़ पाएंगे। आप लोगों से बात करें जिनको सिमिलर टाइप ऑफ डिजीज है, आपके साथ में अगर ग्रुप बना हुआ है आप उनसे बात करें क्योंकि आपको सपोर्ट कर सकते हैं। कई बार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह की चीज कोप करने के लिए, बात करने के लिए हैं। तो यू शुड ऑलवेज टॉक टू द पीपल हु आर in the similar kind of disease. So many organizations and hospitals have run support groups. So when you need help, you can always go to them. There are many online groups also. You can always join those groups so that you can discuss with them and you can have more knowledge. Maybe they will have more, when you discuss, you can tell about your problem and they can always sort out your problem in some ways or other.
टेल अदर्स अबाउट योर क्रॉनिक इलनेस, आपको अपनी क्रॉनिक इलनेस के बारे में दूसरों को बताना चाहिए. व्हाई? बिकॉज दे विल नो हाउ टू डील विद इट व्हेन यू आर विद देम. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो वो लोग आपकी मदद करते हैं. People will react in different ways. They may be surprised or nervous. So sometimes what happens is जब आप बताते हो अपनी इलनेस के बारे में, लोगों को डर भी लगता है, वो लोग चौंक भी जाते हैं और उनको नर्वसनेस भी होती है. और कुछ लोग कहते हैं चिंता मत करो, हम हैं. तो आप लोगों को जिन लोगों को भी क्रॉनिक इलनेस है, you should go to only those people who are positive towards you and they say positive things towards you. Otherwise, it will have negative impact on your mental health. You should always tell about your illness. Why? Because if you have medical emergency, you want people to step in, help you and help you. तो अगर आपको लोगों को बता देना चाहिए, अगर आपको डायबिटीज है या हार्ट प्रॉब्लम है या कोई कैंसर है या कुछ भी है, कोई भी सीरियस एलिमेंट है, आपको आसपास के लोगों को बता देना चाहिए. क्योंकि अगर मेडिकल इमरजेंसी आती है तो ये लोग आपकी मदद करते हैं. Even if you have epilepsy, you should always share with your co-workers so that if you have a seizure, you can always share it. If you have diabetes, you should always tell them so that when you have low blood sugar, at least they can give you some sugar and you can regain your normal sugar level. So let people help you. हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई हमारी मदद नहीं करेगा, but I have seen many people helping each other, and in times of COVID also people help each other. So you must be knowing that we are very connected, interconnected. In times of need we are there to help each and everyone. So अगर हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, पर अभी का जो बर्निंग एग्जाम्पल है वो है कोविड सिचुएशन. कोविड जब आया था तो लोगों ने सबकी एक दूसरे की मदद करी थी. तो इसलिए लोगों को कम नहीं समझना चाहिए. उन लोग का एक दूसरा चेहरा भी है जो आपको ये बताता है कि आप जो है आपके आसपास वो लोग भी हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं. Then once you are disabled, then you should take help from others for your daily task. तो आपको शर्माना नहीं चाहिए. अगर आप नहीं काम कर सकते हैं अपने आप से, तो आपके पास ऐसी हेल्प होनी चाहिए जो आपका डे टू डे जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सके. तो you should never shy away from taking help from anyone if you are suffering from any chronic illness. Now, we are not diverting from our original topic. So we will come to the neuroplasticity training for chronic illness and pain. So one of the areas of neuroplasticity training I have found particularly helpful is in treating the chronic illness, not rather treating, managing. So some people will take some supplements. Yes, you should take some supplements which may help you, and it may not help to cure you, but it may help you to control the symptoms. In this type of neuroplasticity training, we are looking at training the limbic system, which includes amygdala, to improve health outcomes. We focus on the limbic system because past physical and emotional trauma, including chronic health issues, may trigger limbic system imbalances. तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हम जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसको हम कहाँ पे फोकस करते हैं? ब्रेन के उस हिस्से में फोकस करते हैं जो फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स जो है, फ्लाइट एंड उसका रिस्पॉन्स जो है उस पे वर्क करता है. तो अगर आप उस दौर से गुजर रहे हैं तो क्या होता है कि आपका जो लिम्बिक सिस्टम है या ब्रेन का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है. तो उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करें.
Some ailments here are just few ailments where we can work with this. Chronic fatigue syndrome, Lyme disease, food sensitivity, multiple sensitivities, then overwhelming, जब आपको बहुत रोना आता है, डिप्रेशन होता है, ADHD, then chronic inflammatory response syndrome, बहुत सारी डिजीजेस हैं जहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। और कैसे करते हैं? हमारा ब्रेन ऑलवेज जो है सेफ्टी की तरफ दौड़ने की कोशिश करता है। तो क्या होता है कि जब हमारा ब्रेन जो है, मान लीजिए आपका ब्रेन जो है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे आग लग गई है, तो आप क्या करेंगे? आप भागेंगे। तो क्यों भागेंगे? क्योंकि आपका ब्रेन जो है आपको सिग्नल दे रहा है भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो आप जल जाओगे। ठीक है? तो you have to assess your environment when you are getting a threat. Okay? When the limbic system, particularly amygdala, perceives a threat, trigger a defensive response. This is fight or flight or freeze response. मेरे को word नहीं आ रहा था. So this is the fight, flight or freeze response, which often shows up as physical pain or emotional response. तो क्या होता है कि जब आपके सामने ऐसा थ्रेट आ जाता है तो क्या होता है? आपका ब्रेन क्या करता है? अमाइगडाला जो है वो फाइट करता है, फाइट नहीं करता है, भाग जाता है, फ्लाइट करता है, या फिर वहीं पे खड़ा होकर के फ्रीज हो जाता है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। जैसे कि आपको पेन हो जाता है या इमोशनल रिस्पॉन्स होने लगता है, जैसे कि रोना आना या आप लड़ते हो, व्हाटएवर। So every time an event triggers a fear response, the brain remembers that the limbic system is wired through neuroplasticity to have a threat response anytime a similar event happens, whether it is threatening or not. अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, जैसे आग लग गई और आप भाग गए या आप जल गए, तो सिमिलर सिचुएशन में आपका जो ब्रेन है वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा कि आप भाग जाओ। पर बड़े होने पे ऐसा नहीं करना है, आपको उस फायर से फाइट करना है, आपको उसको बुझाना है। आप बुझाएंगे नहीं तो वो फायर और बढ़ जाएगी। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन न्यूरोप्लास्टिसिटी, उसका सोल्यूशन निकालना, ताकि जब आप सिमिलर कंडीशन में आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। For example, let's say you have been dealing with chronic health issues of bloating, joint pain, brain fog, fatigue, and stomach pain for a few years. You tried many different treatments to resolve these issues, and they did not get better. Eventually, you started low inflammatory diet and you do start feel better. Now, you have energy, no stomach pain, and your brain fog is gone. But then you try to introduce a new food and you bloat a little. This bloating is often normal in digestion, but since bloating in the past has been a sign of threat to your body, the limbic system, that is brain system, may have an overactive response and send additional signals to brain that you have pain in your stomach and joints. So you experience anxiety and fear. तो क्या होता है? मान लीजिए आपको पेट में दर्द था, जॉइंट पेन था बिकॉज ऑफ फूड, आपने फूड चेंज कर दिया। अब फूड चेंज कर दिया तो क्या हुआ कि आप अच्छा महसूस करने लगे, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा डिफरेंट फूड खाया तो आपको फिर से वही प्रॉब्लम, ब्लोटिंग और जॉइंट पेन शुरू हो गया। तो आपको डर लगने लगा कि मैं ये खाऊंगा तो मुझे दर्द होगा, पेट में दर्द होगा और मेरे हाथ पैर में दर्द होगा। तो फिर इस सिचुएशन में हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं। तो retraining the limbic system to respond less defensively to these past triggers and can therefore be an important part in healing chronic illness. तो हम ये जो पुराने पेन है इनको हम उन ट्रिगर्स को रीट्रेन करते हैं कि नहीं, आपको ऐसा पेन नहीं होगा, और तब हम इस पे काम करते हैं ताकि हमारा ब्रेन जो है फिर से उसी पुराने स्टेट में आ जाए कि हमें पेन ना हो या कम पेन।
This does not mean your symptoms of pain are all in your head. ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में ही है. It means that brain is very good at doing its main job, keeping you safe. तो ब्रेन क्या करता है? आपको सुरक्षित रखने का कार्य करता है. Just like it took repeated experience for the brain to have an immediate threat response to anything in the past that caused stomach pain and brain fog. So it will take time for it to rewire to know you are safe. तो ज्यादातर ये जो ब्रेन ट्रेनिंग के प्रोग्राम होते हैं उनको जो है कुछ समय तक करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए, ताकि आपका ब्रेन जो है फिर से रिवायर हो जाए और आपको वो दर्द ना हो, दर्द कम हो जाए. Neuroplasticity training for the limbic system may help to reprogram overactive limbic system responses and overstimulation of the nervous system and bring your system back into balance. तो आपका लिम्बिक सिस्टम, दैट इज ब्रेन का जो सिस्टम है, उसको कंट्रोल करता है और फिर उसके बाद जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो आपके सिग्नल्स को ले जाता है पूरे बॉडी में, उसको बैलेंस करता है. तो क्या क्या हम कर सकते हैं? लर्निंग न्यू थिंग्स कैन स्ट्रेंथन न्यूरल नेटवर्क्स. आप नई नई चीजें करिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए. आपको नींद पूरी होनी चाहिए, 7 to 9 आवर्स की नींद होनी चाहिए. यू शुड स्लीप वेल, डीप अनइंटरप्टेड स्लीप. यू शुड डू फिजिकल एक्सरसाइज. You should do some new skills like learning something new. Deep breathing, गहरी सांस लेना, सांसों का जो हम लोग के यहाँ सिखाया जाता है योगा में. Moderate movement like jogging, dancing and walking. It is also helpful in developing new neural pathways. Then co-regulation with a loved one in a secure relationship. अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने रिलेशनशिप को अगर आप अच्छा रखेंगे और उसको रेगुलेट करके रखेंगे तो आपके न्यूरल्स जो है वो डेवलप होते रहेंगे. So you have to keep a good relationship with your partner. Yoga, Tai Chi and Qigong helps in neural development. Chanting and singing also help. In many of the religion, they are saying that they do recommend to chant mantras. That helps in, because it is repetitive thing. The repetition of certain mantras, it helps in rewiring your brain. Then singing also helps. If you learn classical singing, classical or any kind of singing, it will help you develop the brain nerves. Walking barefoot on the beach and grass and nature, that also helps. आप नंगे पैर अगर बीच पे चलेंगे या घास पे चलेंगे या कनेक्ट करेंगे नेचर में, आपको अच्छा लगेगा और आपके जो न्यूरल्स हैं वो न्यूरल जो ब्रेन में नर्व्स हैं वो डेवलप हो. मसाज कराएं. मसाज इज ऑल्सो वेरी गुड for developing new neurons and strengthening the nerves. तो मालिश कराने से भी जो है आपकी नसें मजबूत होती है. तरह तरह की स्मेल्स लाइक अरोमा थेरेपी में यूज किया जाता है. तो different kind of smells will also help in developing new neurons, triggering new memories. So smell से भी आपको हेल्प मिल सकती है कि आप नई नई चीजें, नए नए नर्व्स डेवलप कर सकते हैं. रेस्टिंग एंड रिलैक्सेशन विदाउट स्क्रीन टाइम और ऑब्लिगेशंस. कम करें अपना मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर पे देखना. दैट आल्सो हेल्प यू टू डेवलप न्यू न्यूरॉन्स. Cold plunges,
ठंडे पानी से नहाइए, गर्म पानी से नहाइए, दोनों का एक साथ करके नहाइए. That will also help you in developing neurons. So taking bath with hot water and then cold water and then both the water, it helps you to develop with the new neurons, because this is sensation. So it will trigger your sensations. So आपके नए neurons develop होते हैं. Then meditation of course helps you. Guided meditation जो मैं कराऊंगी वो भी help करेगा. Then sunshine. Nowadays people are not going out in the sun. Most of them, they are in a closed environment. So you should always go out in the sun, and for at least for a few minutes it will help you to develop new neurons. बाहर अगर आप जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो आपको, बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, अगर आप बाहर जाएंगे तो आपके नए न्यूरॉन्स डेवलप होंगे, because warmth of the sun, you are feeling that warmth, it will help you to develop new neurons. And of course vitamin D मिलता ही है. Then going out in the forest and nature, that also helps you. बाहर अगर आप जाएंगे, नेचर में जाएंगे, जंगल में जाएंगे, तो आपको और अच्छा लगेगा. Then you should always write about your past trauma, journal to release past trauma. अगर आपके साथ कोई भी दुख की बात हुई हो या कोई ऐसा घटना घटी है जो कि आपको अच्छी नहीं लगी है, तो उसको अगर आप लिख देते हैं तो आपके नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं और आप उसको ओवरपावर करने की जो कोशिश करते हैं, उससे जो ट्रिगर्स हैं वो कम हो जाते हैं और आपको उतना धक्का नहीं लगता जब आप उन चीजों को याद करते हैं. Salt bath, Epsom salt bath, that also helps you in developing and clearing your negative responses, because it contains magnesium, which can increase mood by elevating serotonin, which reduces stress. Somatic experiencing. Somatic experiencing is a body-orienting technique designed to discharge stress that gets stuck in the body as a result of trauma or other sudden difficult experiences from the past. तो जब आप ये वाले सोमैटिक एक्सपीरियंस करते हैं तो क्या होता है कि आपके नर्वस सिस्टम जो है वो रेगुलेट होता है और उससे आप सीखते हो. जब कुछ सीखते हो कि कैसे बॉडी कनेक्ट होती है तो आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है. जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हो या हल्के से छू रहा है कोई या स्पेसिफिक मूवमेंट करते हो तो आपके नए नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं. So many ways are there how to develop your neurons. That is what I am telling you. To overpower your chronic illness, to manage your chronic illness. So vagus nerve soothing exercise, there are many exercises. One day I will take one session for vagus nerve soothing exercises to develop your neurons in your brain. Because it activates the parasympathetic nervous system. वो nervous system जो कि हम इनवॉलेंट्री करते हैं, वॉलेंट्री नहीं, जैसे सांस लेना, ये इनवॉलेंट्री. तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप करता है. कैसे डेवलप करता है? उसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है उसमें नए नए नर्व जो है डेवलप होते हैं. हिप्नोथेरेपी, guided meditation is a part of hypnotherapy. इंटरनल फैमिली सिस्टम, आपका जो फैमिली सिस्टम है वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है. तो इफ यू आर पार्ट ऑफ फैमिली, देन इट हेल्प्स यू टू डेवलप न्यू न्यूरॉन्स. How? That is engaging in different activities, like in a family when you go out for a holiday, you are developing new neurons. Then there are devices for touch and vibration therapy that also helps you to develop neurons. तो बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिससे आप टच करते हैं, वाइब्रेशन यूज करते हैं, जिससे कि आपके न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं. बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं इस तरह के
वाइब्रेशन वाले यंत्र। आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग की ये EMDR ये एक तरह की साइकोथेरेपी है जिससे कि हम न्यू न्यूरॉन्स डेवलप कर सकते हैं जिनको इमोशनल डिस्ट्रेस होता है। देन यू शुड टेक ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो है वो जो है आपके नर्वस सिस्टम को जो है डेवलप करता है, and it is especially useful for heart ailment. Magnesium is one of the essential minerals for a healthy nervous system, so you should take magnesium also. विटामिन बी आप लीजिए। सेंट जॉन्स वॉर्ट ये भी एक हर्बल रेमेडी है जिससे कि आपका जो है नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन लिम्बिक सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। Electrolyte balance भी होना चाहिए, that is sodium, potassium and salt and everything. It should be balanced. If it is not, if it is out of balance, then you will have speech difficulties or any other limbic problems. So you should always have this electrolyte balance, and have coconut water daily. Here or in many coastal areas, people do have coconut water every day. Then you should have blood sugar balance. If blood sugar is high or low, it will give you that response of flight and fight situation. Then fasting. Most of the religion have this fasting system. Fasting is very good for stress in the body, and it also promotes new neural development also and spiritual health also. Then high quality nutrition, avoiding processed food and eating lots of fermented food. This also helps you in maintaining the nervous system and the limbic system to develop healthy relationship with your body and mind. Caffeine is also, makes your mind alert at some point. And it is well known, most of the people working day and night shift, they use caffeine to avoid sleep. Limit alcohol consumption. Most of the people, they are taking alcohol to maintain their stress. That is not true. It can give you addictive habit. So better to avoid alcohol. Ashwagandha. You must have heard about ashwagandha. It is very good for improving moods. And definitely when your mood improves, आपका जो neurons है वो भी develop होता है. Ginseng, this is also used. Ginseng is also good for mental health. Many herbs are there which you can use for improving your mental health. Mental health, chronic pain, and other things like asthma and all, they take many herbs. For chronic pains like arthritis and all, they take many herbs, and it does help them to develop the new neurons and strengthen their nervous system and limbic system. Then there are different teas. Chamomile, it is very well known that it will help the activities in the brain and it will develop the neural nerves. And yes, you should avoid people with negative thoughts. So now we should always be connected with positive people who are generating good thoughts and are positive in their life. So build healthy relationship with these kind of people and always
have a good relationship which will help you to develop your limbic system and keep it healthy by having positive thoughts, not the negative thought. Avoid all the negative thoughts. So now we come to the if you have any questions, regarding this, I won't take it now. We will take it on WhatsApp or on my personal number. If you have any questions regarding this, you can always ask me because we are running short of time. So we will do a quick meditation. So all of you, close your eyes. Breathe in and breathe out. जहां पे भी आप बैठे हैं, आप लेट जाएं या बैठ जाएं और गहरी सांसें लें. Relax yourself, lie down or sit down comfortably. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. अपने पैरों को देखें. आपका टो रिलैक्स है, आपका पैर पूरी तरह से रिलैक्स है. Your toes are relaxed, your legs are relaxed, your ankles are relaxed, your knees are relaxed, your lower body is relaxed. आपका घुटना रिलैक्स है, आपका लोअर बॉडी रिलैक्स है, आपका पेट रिलैक्स है, your stomach is relaxed. Breathe in and breathe out. Go deeper and deeper into your subconscious mind. Your chest is relaxed. आपका सीना रिलैक्स है और गहरे जाएं, गहरे चल जाते जाएं. आपका गला रिलैक्स है, आपका गाल रिलैक्स है, आपकी जॉ बोन्स पूरी तरह से रिलैक्स है. Your neck is relaxed, your cheeks are relaxed, your jaw bones are relaxed. Your eyes are relaxed and closed shut till I say open your eyes. आपकी आंखें बंद हैं, तब तक बंद हैं जब तक मैं न कहूं open your eyes. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Relax yourself completely and totally. आपका माथा रिलैक्स है, आपका नेक, आपका पूरा सिर रिलैक्स. आपका पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स. Breathe in and breathe out. Let go some of the tension from your body. And breathe in and breathe out. Now, imagine a warm golden energy entering from your top of your head. अब आप अपने सिर के ऊपर गोल्डन एनर्जी को महसूस करें जो आपके सर पे से आपके अंदर जा रही है, आपके ब्रेन के अंदर जा रही है. It is going and floating into your brain. When you breathe in, the energy enters your system, and when you breathe out, it spreads into your brain. जब आप सांस अंदर लेते हैं तो ये गोल्डन लाइट आपके अंदर एंटर करती है, और जब आप सांस बाहर करते हैं तब ये आपके ब्रेन में भर जाती है. अब आप
अपने आप को रिलैक्स महसूस करें. Notice the feeling of relaxation inside your body that you can perceive in your head, going on inside your brain with golden energy, and let this feeling of relaxation expand in every corner of your head. अब इस गोल्डन एनर्जी को अपने पूरे ब्रेन में भरते हुए देखें और आपका पूरा ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है. आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया. I want you to explore the idea of acceptance. There's a great saying for this. Grant me the serenity to accept the things I cannot change. अब आप इस saying को अपने मन में एक्सेप्ट करें कि हम बहुत सारी चीजों को बदल नहीं सकते और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं. When you contemplate acceptance of your chronic illness, it does not mean that you should be happy about having a chronic illness or that you should stop being a warrior and fight for your mental and physical health. एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई भी इलनेस है आप उसको फाइट नहीं करेंगे, आप उसको फाइट करेंगे. आप मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए फाइट करेंगे. But for you to acknowledge that you have chronic illness, it's not your choice. ये आपकी चॉइस नहीं है, बट आप इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये आपके पास है, क्रॉनिक इलनेस है. आपने इसको मांगा नहीं है, पर ये आपके पास है और ये सच्चाई है. We didn't ask for it, but for now, it's your reality. There may be many occasions, perhaps every day, where you'll have intense struggles with your illness. ऐसे बहुत सारे दिन होंगे जब आप इससे लड़ रहे होंगे, इस इलनेस से लड़ रहे होंगे. आपको गिल्ट फीलिंग भी होगी, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगा, आपको डिप्रेशन भी होगा, आपको गुस्सा भी आएगा. When you are struggling with your illness, you have the feeling of guilt, frustration, depression, and anger. But it may help you if you keep in mind the following things that I'm going to tell you. पर इससे आप थोड़ा सा मदद ले सकते हैं जो चीजें मैं आपको अब बताने जा रही हूँ. 1. You did not ask to be chronically ill. आप के वजह से आप chronically बीमार नहीं. 2. Chronic illness brings a sense of powerlessness and desperation, but when you can, you will have a daily self-care checklist and take time out just for yourself whenever you can. दूसरा, chronic illness की वजह से आपको पावरलेसनेस, आपको डेस्परेशन होता है, आप अपने आप को शक्तिहीन समझते हैं. लेकिन जब आप डेली अपनी देखभाल करें, अपना सेल्फ केयर का एक चेकलिस्ट बनाएं, अपने लिए समय निकालें, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, तो आपको अच्छा लगेगा. 3. तीसरा point. There will be many occasions where you cannot be there for people, and it will be tempting to have feelings of guilt and
self-loathing towards yourself. But when those situations arise, you will show yourself compassion and love because that is what you deserve. कई बार ऐसा होगा जब आप किसी की मदद नहीं कर सकते, तब आपको गिल्ट लगेगा, ये भी लगेगा मैं उनकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन आप उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं, अच्छी फीलिंग भेज सकते। 4. You can only do what you can only do. Everyone has limitations and you have yours. You will accept what your limitations are and work within those. You might not be able to do things that you want to do, but you will do what you can. 4. चौथा पॉइंट, आपके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, आप वही सब काम कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं, और अपनी लिमिटेशंस को आपको एक्सेप्ट करना है, और आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, जो आप चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो आप करते रहिए। 5. We all have our individual needs and yours is extra. This is nothing to feel guilty about. And there's nothing wrong in this. This is the reality for now and you can surrender to it for now. No one knows what the future holds and you can retain hope for the future. 5वां, हर एक की अपनी नीड और आपकी कुछ ज्यादा ही नीड्स हैं, जरूरतें हैं, आपकी कुछ ज्यादा ही जरूरतें। इसमें आपको गिल्टी नहीं फील करना, इसमें कोई गलत नहीं है, ये सच्चाई है और आपको इसके आगे नतमस्तक होना है। आपको नहीं मालूम आगे आपके लिए क्या फ्यूचर है, लेकिन आपको उस फ्यूचर को हमेशा अपने आगे रखना कि अच्छा फ्यूचर ही हो। 6. Family and friends love you and support you and want to be there for you, and no one is judging you. You are not a burden. You are valued and you are loved. People want to go out of their way for you because they value you. They value your love and they value your friendship. Never forget and be mindful that the sign of true love and friendship is when you go out of your way for that person. 6वां पॉइंट, आपके दोस्त और आपका परिवार आपके साथ है और आप हमेशा अपने साथ रखना चाहता है, आप उनके लिए बोझ नहीं, आपको वो वैल्यू करते हैं, प्रेम करते हैं और आपके लिए कुछ भी करें, तो आपको कभी भी ये नहीं भूलना कि फ्रेंडशिप और परिवार का प्रेम हमेशा आपके साथ है। Now, relax your head, relax your body. Now, this golden ball, which is there in your head, is spreading in your brain, stabilizing all the electrical impulses of your cortex and giving you a nice feeling of good now. अब गोल्डन लाइट आपके चारों ओर, आपके ब्रेन के चारों ओर भर गई है, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं कॉर्टेक्स के, वहां पे फैल गई है और आपको अच्छा महसूस करने के लिए गुड नाउ की फीलिंग आ रही है और आप इसको महसूस कर रहे हैं।
इस गोल्डन एनर्जी को महसूस करें, इस गोल्डन एनर्जी को फैलते हुए महसूस करें. While you continue to breathe warm and golden energy, imagine that this energy is spreading from your brain to your nervous system. See the golden energy spreading in your chest. Light up all the network of your nerves in that area, all the nerves, until the smaller branches are lighting up with warm and golden energy. अब आप ये गोल्डन एनर्जी को अपने हर एक नसों में फैलते हुए देखें, छोटी बड़ी सब नसों में फैलते हुए देखें. आपके शरीर के जितने भी नस की जाल बने हुए हैं, सब में गोल्डन एनर्जी भर गई है. छोटे बड़े सब लाइट अप हो गए हैं गोल्डन एनर्जी से, और ये सब रीजनरेट हो रहे हैं. बहुत सारे बनते जा रहे हैं, नई नई नसें बनती जा रही हैं, बहुत सारी नसें बन रही हैं. So these nerves are regenerating, relaxing and regenerating. Perceive the feeling that this causes in your chest, in your belly, in your brain, in your left arm, passing through all your nerves like branches and extend until the fingers tips of your left hand. Perceive your arm and hand lighting up internally. आपके शरीर के हर अंग में ये गोल्डन एनर्जी बढ़ती जा रही है. आपके हाथों की नसों में जा रही है, फिंगर्स की नसों में जा रही है, और पूरी तरह से आपके फिंगर टिप्स पे भी पहुंच गई. आपके दोनों आर्म्स पूरी तरह से गोल्डन लाइट से भर गए हैं, और इसमें से गोल्डन रोशनी निकल गई. इसमें से जितनी भी इसमें नसें हैं वो सब फिर से बन रही है, नई डेवलप हो रही है. All the nerves are regenerating, relaxing and regenerating. Now come to your right hand. Your left arm is full of golden energy. Now your left arm is full of golden energy. All the nerve going from shoulder to your fingertips are lighted up with golden energy. And they are regenerating. अब आपका राइट आर्म पूरी तरह से गोल्डन लाइट से घिर गया है. सारी नसें गोल्डन लाइट से भर गई, और आपके फिंगर टिप्स तक सारी नसें गोल्डन लाइट से भर गई. ये सब आपके हाथ को गोल्डन लाइट में तब्दील कर रहे हैं. Now fill your upper body, your chest, with this golden energy. All the nerve going in your heart, in your chest, in each part of your body is regenerating. All the nerves filling up with golden light. अब आप अपने ऊपरी हिस्से को, चेस्ट को गोल्डन लाइट से घिरा हुआ देखें. हर एक नस को गोल्डन लाइट से भरते हुए देखें. नई नसें फॉर्म होते हुए देखें, और आपका चेस्ट पूरी तरह से गोल्डन लाइट से भर गया है, और उसमें से गोल्डन लाइट निकल रही है. Now your stomach is full of golden light. आपकी नसें, पेट की नसें पूरी तरह से गोल्डन लाइट से घिर गई हैं. छोटी छोटी नसें पूरी तरह से
गोल्डन लाइट से भर, और नई नसें बनती जा रही हैं जो कि गोल्डन कलर की. योर nerves in the stomach is full of golden light. All the nerves, smaller nerves, bigger nerves, are all full of golden light, and they are lighted up with golden light. And all the new nerves are developing and regenerating and filled up with golden light. Now come to your both the legs. आपके दोनों पैर पूरी तरह से गोल्डन लाइट से भर गए. इसमें जितनी भी नसें हैं वो सब गोल्डन लाइट से भर गई. छोटी छोटी नसें, बड़ी बड़ी नसें, सब गोल्डन लाइट से भर गई, और नई नई नसें बनती जा रही. Your both the legs are lighted up with golden light. Your legs are filled with golden light. All the nerves are filling up and creating new nerves, regenerating new nerves, which are also filled with golden light. Your both the legs are lighted with golden colored light. Your whole of your nervous system is lighted up with golden light. आपका पूरा नर्वस सिस्टम गोल्डन लाइट से भर गया है, जैसे कि एक बल्ब जल गया है. Your whole nervous system is lighted up like a light bulb. Golden bulb softly fills up every time that you breathe in and breathe out. All your nervous system glows and fills up with warm and golden energy, relaxing and regenerating. Everything dissolves when the sweet healing energy touches it. For 1 minute, continue to breathe and eliminate, regenerating and relaxing your whole nervous system. आपका पूरा शरीर, पूरे नर्वस सिस्टम में गोल्डन लाइट भर गई और आपको हील कर रही है. आप जितनी बार सांस ले रहे हैं वो और ग्लो कर रही है, जलती जा रही है, और उसमें नई नसें बनती जा रही हैं. आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से रिलैक्स है, एक्टिवेटेड है, और उसमें नई नसें बनती जा रही हैं. आप स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं. यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. Whole of your body is lighted up. Your system is lighted up. आपका पूरा सिस्टम, नर्वस सिस्टम लाइट अप हो गया है, और हर नसों में जो माइलिन शीट है वो स्ट्रांग हो गई है, जो कि नर्व को कवर करती है. जैसे कि इलेक्ट्रिक केबल के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ऐसे ही माइलिन की कोटिंग ये स्ट्रांग हो गई, बहुत स्ट्रांग. ये आपकी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को प्रोटेक्ट करती है, नर्व्स को प्रोटेक्ट करती है, ताकि आपकी एनर्जी इधर उधर न जाए, टारगेटेड एरिया पे जाए. So this golden energy is regenerating all the myelin sheath that coats your nerves. Just like an electric cable, these sheaths improve the flowing of electricity, protecting the nerves and avoiding energy dispersion. If there is any other part of your nervous system
that you perceive being more in need of to be generated. Just channel this energy. Bear all the energy so that it can repair and reinforce that area. Imagine this energy like gold and honey that coats your nerve, nurturing and protecting them, becoming solid like a flexible and strong sheet. इस कोटिंग को आप महसूस करें, इमेजिन करें कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई है और आपके हर एक नस को रिपेयर कर रही है और उसको कोट कर रही है, उसको कवर कर रही है ताकि वो नसें प्रोटेक्टेड रहें और आपको उसकी शक्ति मिलती रहे। वो इतनी स्ट्रॉन्ग शीट है, जो माइलिन की शीट है, जिससे कि आपकी नसें हेल्दी रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। Your nervous system is changed. Your limbic system is changed. You may perceive a feeling of warmth internally, feeling of relaxation. Anything that you perceive now, it's an intuition, useful to let you understand what is the ideal state to support the regeneration of your nervous system, your limbic system. Learn to bring yourself in this state and communicate with your nerves just like you do with something alive. Communicate with your limbic system just like you would do with something alive and intelligent. अब आप अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, इन अंदर से अपने आप को रिलैक्स महसूस कर और अब आपको इंट्यूशन महसूस हो रहा है। आपको ये इंट्यूशन हो रहा है कि आप अपनी नसों को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। आप अपनी नसों के साथ, अपने लिम्बिक सिस्टम के साथ, अपने ब्रेन के साथ इस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं जैसे आप उसी बंदे से जो अलाइव हो उससे बात कर रहे हो। जैसे आप किसी व्यक्ति से बात कर, आप उससे बात करें और आपको पता लगेगा कहाँ पे आपको जरूरत है, वहां पे आप बात करके रीजनरेट कर सकते हैं अपने नसों को, अपने ब्रेन की नसों। Using the universal energy to relax and make them stronger and more flexible. इसको आप मजबूत कर सकते हैं, आपके शरीर को मजबूत कर सकते हैं। You have the capacity to regenerate. आपके पास वो शक्ति है जिससे आप नसों को रीजनरेट कर सकते हैं, ब्रेन की नसों को रीजनरेट कर सकते हैं, अपने शरीर की नसों को रीजनरेट। अपनी नसों को पूरी तरह से महसूस करें, गोल्डन लाइट दिख रहे होंगे। You can always regenerate your nerves, your limbic system, your nervous system, and take care of them like you take care of your plants and flowers in your garden. Daily, you can provide this nutrition of golden light to your garden of nervous system and limbic system. आप इस गार्डन को, नर्वस सिस्टम के गार्डन को और ब्रेन के गार्डन को रोज हीलिंग दे सकते हैं, उनको नर्चर कर सकते हैं, उनको इस गोल्डन लाइट से भर सकते हैं ताकि वो मजबूत रहे और नई नई नसें बनाते हैं।
R इनको थैंक्स दें। दिन भर थैंक्स दें इन नस को, इन नर्वस सिस्टम और लिम्बिक सिस्टम को थैंक्स दें। Give thanks to your nervous system and limbic system every day, every second of the day, that they give you so much of information and they regenerate and regenerate to keep you healthy. Now, relax yourself, wriggle your toe, move your hand a little bit and open your eyes. अपने पैरों को हिलाएं, अपने हाथों को हिलाएं और अपनी आंखें खोलें। Now you can open your eyes. The ball is, the golden light is always with you. You can use it anytime when you need to regenerate your nerves and your limbic system. So for you all, this channel is open to regenerate your nervous system and the nerves in your brain, that is limbic system. Slowly open your eyes. If you want, you can stay in this state for longer period, regenerating your nervous system and your limbic system. Whenever you want to do this meditation, this golden light will always be with you, inside you, generating, regenerating new nerves in your nervous system as well as in your limbic system. Breathe in and breathe out. आपको जब भी इस गोल्डन एनर्जी की जरूरत हो तो आप इसको, इस मेडिटेशन को जब भी करेंगे तो आप अपनी इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं और नई नसों को बना सकते हैं। आपकी नसें जो ब्रेन में है और जो आपके नर्वस सिस्टम है वो सब रीजनरेट होने लगेंगे। Slowly breathe in and breathe out and come out. धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं और अपनी आंखें खोल दें। Move your hand a little bit, wriggle your toes and open your eyes.
Thank you, Nupur ji. You're welcome. So should we end this session? I think everybody is in a state of meditation. Yeah, I really like that. नुपुर जी बहुत अच्छा मेडिटेशन, इमेंस ग्रेटिट्यूड, दूसरे प्लेनेट पे ट्रांसफॉर्म हो गए थे वर्ल्ड में. थैंक यू. Thank you. You're welcome. Okay, thank you everyone. Thank you, Shabana. Thank you, Maven team. Thank you all the audience out here